इंग्लिश स्टाइल में डालेंगे, मैक्सिकन स्टाइल में डालेंगे। तो ऐसे ऐसे जो चीज है, हमें पूरा फ्रीडम है कि हम उसको अपने चर्च के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार हम उसको चेंज कर पाए। तो आप जब या तो ऐसा कर सकते हो, आप किताब में चेंज करा सकते हो, पहले से एक क्रॉस डाल सकते हो, सिस्टर ने क्रिस्टीना सिस्टर ने अभी बताया, एक मार्कर से आप कट डाल सकते हो जहां आपको जरूरत नहीं है। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि जब आप पढ़ा रहे हो तो उसको अपने तरीके से आप एकदम से पढ़ा सकते हो। तो आपके पास पूरी फ्रीडम है। अभी हमारा कन्नड़ा वीबीएस चला था, कन्नड़ा लैंग्वेज में, तो उनको फ्लायर लगा कि उनके तरीके से थोड़ा सा डिजाइन करना है। तो उनने हमारे फ्लायर को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें और डिजाइन करके उनने उसको प्रिंट करके सबको दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपके पास फुल फ्रीडम है इसको अपने हिसाब से चेंज करने का। Good evening, brothers and sisters. We have started recording, so I want to go ahead and greet everyone. Welcome to coaching class number 11. नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको हमारे इस कोचिंग क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। और अब हम इसके 11वीं क्लास में आ गए हैं। So next week is our last class for this session, and then Sister Blessing will be in charge of what's next. अब हमारा जो अगला जो थर्सडे को जो क्लास होने वाला है, वो इस सेशन का, इस सत्र का आखिरी क्लास होगा। और इसके बाद सिस्टर क्रिस्टीना ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है आगे के लिए। अब वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और मैं आप लोगों से भी डिस्कस करके हम लोग उसको आगे करेंगे। Yeah. So I want to take some time today to review what we've covered in these 12 weeks. तो आज जो मैं करने जा रही हूँ वो है कि हमने इस पिछले जो इस 12 सेशन में हमने क्या क्या किया है उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे हम। And also I would like to ask you if you have any ideas or what kind of training you are interested in. और साथ में मैं आप लोगों से बात भी करना चाहती हूँ और आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से एक ट्रेनिंग को चाहते हैं। आपके जो आइडिया है, आपके जो विचार हैं, वो आप मेरे से जरूर साझा करें। Also, to make sure it's in the recording, we also were just discussing that it's okay to change the books based on your denomination or the version of the Bible you use or different changes you need. You have permission to make those changes you need in our books. और उसी तरीके से जैसे हमने आज इस सत्र के शुरुआत में बात की, हम लोग हमें पूरी आजादी है कि हम हमारी जो किताब में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आप जिस डिनोमिनेशन में जाते हो, आप जिस चर्च के साथ हो, जो टीचिंग आप फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आप चीजों को बदल सकते हो। So some of the questions people have for children's ministry often include things like, how do I feel like I'm teaching all alone? How do I get more help? जो कुछ प्रश्न आते हैं कि कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं खुद को पूरा सिखा रही हूँ या किसके लिए सिखा रही हूँ करके। I feel like I'm alone and the senior pastor doesn't see children's ministry. How do I communicate better with the senior pastor of the church? कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे सीनियर पास्टर्स होते हैं, वो बच्चों के सेवा में उनको कोई शौक नहीं होता, उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता और हमें ऐसा लगता है हम अकेले हैं। Also, many ask about discipline. The children are hard to control, lots of movement, running around, and it's difficult. So discipline is often a common question. और कुछ प्रश्न जो बार-बार आते हैं उसमें ये भी है कि बच्चों को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, किस तरीके से एक डिसिप्लिन में रखा जाए, ये भी एक प्रश्न है जो बार-बार हमारे सामने आते हैं। Also, questions about the curriculum, the syllabus. How do I start the new program? How does this program work? Those are also common.
और वैसे ही इस करिकुलम के बारे में कि मैं कैसे शुरू करूं, मैं कौन सा करूं, क्या करूं, ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे अंदर होते हैं। Also, sometimes special needs or children with disabilities, how to help children with disabilities in our churches. और कुछ बार ऐसी बात भी हमने देखी है जहाँ पे हमारे पास सामने आते हैं जो कुछ बच्चों में कुछ तरीके की कमियां होती है, उन बच्चों को हम किस तरीके से हैंडल करें या उनको कैसे ट्रेन करें। So please think about your children's ministry and what are your struggles and what questions you have that we can help you with this year. तो आप भी आपके चर्च में जो आपके पास कुछ प्रश्न होंगे, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके की बात हो, वो आप सोचिए और वो आप हमसे साझा करिए ताकि हम आपको मदद कर पाए कि आपको हम थोड़ा और उसमें गाइड कर पाए। So I think what I want to do is start with a question that Brother Johnny had. Let me present this. Okay, I have it presented. Okay. So Brother Johnny is not here today, but he can watch the video later. So this is a question he asked. तो आज ब्रदर जॉनी ने एक प्रश्न किया था, तो आज वो हमारे साथ इस मीटिंग में नहीं है, पर मैं इसका जब वीडियो लिंक डाल दूंगी तो वो उसको देख लेंगे, तो उनके प्रश्न का उनको उत्तर भी मिल जाएगा। So he asked, what are the qualities of a responsible leader? उनने ये प्रश्न किया कि एक जिम्मेदार अगुवे के क्या गुण होने चाहिए। So as I was thinking about that, I wanted to share with you today this question. I see these three items: visionary, pastoral, and organized. और जब उन्हें ये प्रश्न किया तो मेरे पास तीन जो उसके सामने जो ऑप्शंस आए, उसमें एक तो है कि जो विजनरी मतलब जो हम क्या वर्ड उसका बोलते हैं, दर्शन देखने वाले, और एक तो है पासवान, और एक कैसे इसको पूरी अच्छी तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से चलाने वाले। So visionary means you need like a direction that your team is going. So you need to choose, are we going to be evangelistic? Are we being disciple making? Are we trying to increase the amount of children in our children's ministry? What are we looking for? तो ये जो दर्शन मतलब किसका है, ये दर्शन आपके चर्च का दर्शन क्या, आपके बच्चों का दर्शन क्या है, आप क्या ऐसा चाहते हैं कि आप इन बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो आगे जाके एक ऐसे जो सेवा करने वाले बने, या उनको खाली आप चाहते हैं कि आपके चर्च की संख्या को आप बढ़ाना चाहते हो। So I was talking with Sister Francis yesterday. She lives in Venezuela. मैं सिस्टर फ्रांसिस से बात कर रही थी कल, जो कि वेनेजुला में रहती है। And she has a ministry that's for clowns. और वो जो सेवा करती है वो ऐसे जो हमने उस दिन देखा था जोक के तरह होते हैं, उनके लिए करती है। So she provides some activities they can do to go to hospitals and encourage children. तो वो जो सेवा करती है उसमें ऐसे है कि वो अस्पताल में जा पाए और जो बच्चे हैं उनके साथ मिल पाए। And so what we've seen, or she shared that they have a challenge to try to reach a certain number of children in the 1 year. और उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक ऐसी जिम्मेदारी है कि इतनी संख्या में उनको बच्चों तक पहुंचना है। So she gives them activities to do in hospital, but she also gives them the vision. We are trying to reach children this year, and so the vision helps a lot with the practical. Yeah, sister, I want to know what word you used. Which children you want to reach? They're in the hospital.
So और they were those going to the those hospital. So she's not saying which children, it's all children, but because of okay clowning ministry, they can go to like street slums, and also they're going to hospitals. ओके तो वो ऐसे बच्चों को ज्यादा पहुंचना चाहती थी जो अस्पतालों में थे, मतलब चाहे वो गली के बच्चे हो, चाहे अच्छे घरों के बच्चे, कोई भी हो, पर जो ऐसे बच्चे हो जिनको हमारे सहायता की जरूरत हो। Have you seen those kinds of things where you see a program where they say we're trying to reach 100,000 children in 5 years? और आपने कई जगह पे ऐसे भी देखा होगा जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम 5,000 बच्चों तक इस साल पहुंचना चाहते हैं। So those are big dreams, but it works also for us in our church. You can say we want to get up to 50 children in our children's ministry. You could have this as a dream or a goal. वो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की बात है, पर हम ऐसे एक दर्शन देख सकते हैं कि हम 50 बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। You could also have say we're working on discipleship. So like with the homework assignments we learn with champions, you could say we want to see children actually living their faith every week in the school. और हम जैसे हम सिखा रहे थे, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम चेले बना सकते हैं। तो बच्चे अपने दिनचर्या में, रोज के दिनचर्या में वो क्या कर सकते हैं कि कैसे इन चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, उसमें हम फोकस कर सकते हैं। So basically what you're counting, what you're looking for is what you're aiming for. You need to aim for something. तो आपका लक्ष्य क्या है, आपकी इच्छा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। And as you provide vision, then your whole team can follow you. अगर आपके पास एक दर्शन है, तो क्या होगा कि वो दर्शन को वाकई जितने आपके साथ लोग हैं वो उसके पीछे हो लेंगे, वो उसके साथ साथ आपके साथ साथ चलेंगे। Also, Pastor Joel mentioned here in the chat that a leader should have integrity. और इन पास्टर ने ये भी बताया कि जो प्रभु की ऐसी जो सेवा करते हैं उनमें बहुत ही मतलब बहुत सच्चाई में सेवा करनी चाहिए है। Yeah, I think that's a very good point. We really need to concentrate on how our life is with God in what we do privately. और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो खुद का जीवन प्रभु के साथ कैसा है, बाहर का जीवन और हमारा खुद का, हम कहीं ऐसा नहीं छुप के तो हमारा कोई और हमारे खुद का जीवन तो नहीं है, हम जैसे सामने दिख रहे हैं क्या हम अंदर से वैसे ही हैं? Because if we have lies or we're cheating, God can't bless us. क्योंकि अगर हम धोखा देने वाले हैं, अगर हम झूठे हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे पाएंगे। And we can easily hide these things from people. Easy to hide from everyone at church. Very easy. और ऐसी चीजों को जो चर्च के वाकई लोग हैं उनसे हम छुपा जरूर सकते हैं, बहुत आसानी से छुपा सकते हैं। But God can see everything. पर परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ देखते हैं। And we need God's blessing, and He can see everything. So integrity is very important. Thank you, brother. तो इस कारण से हमें जो है सच्चाई में, सिधाई में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सच्चाई और सिधाई में नहीं रहेंगे, परमेश्वर तो हमें देख रहे हैं और जांच रहे हैं। तो इसकी ये जो भय है वो हमारे अंदर सदैव होना चाहिए। Also, we want our leader to be pastoral. और हम ये चाहते हैं कि जो अगुए हैं वो उनमें एक पासवानी, एक खूबी होनी चाहिए। So instead of just looking at the needs of your children's ministry and saying, okay, I need someone in preschool, so you will teach the preschool. खाली ऐसा नहीं कि जैसे आपके छोटे बिल्कुल जो बच्चों में अगर कोई किसी की जरूरत है तो हम बोलेंगे हाँ वो जो प्री स्कूल है, छोटे बच्चों की जो स्कूल है उसके अंदर एक की जरूरत है,
तो वो उनको प्रोवाइड करें, ऐसा नहीं। So being pastoral means you're caring about your leaders and teachers. You care about them. और जो इसमें एक, जब हम कहते हैं पासवानी एक हृदय होने का मतलब, आप जब टीचर्स जो उसके शिक्षकगण हैं उनका भी उनका भी ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ बच्चों का भी ख्याल रखने वाले हो। So if one of your leaders loves leading games with the older students and playing with them, don't put them in with the preschoolers changing diapers. और अगर समझ लीजिए जो बड़े बच्चे हैं थोड़ा खुल के खेल रहे हैं, उनका जो खेल है थोड़ा अलग है, उस समय आप जबरदस्ती उनको गुस्सा करके बिठा के छोटे बच्चों के साथ खिलौना खेलने में मत बिठाना उन्हें। So also you want our children's pastor to care for us as people. We want to know, like, if someone's sick or their family member passes away, to know and say, okay, brother, we'll cover for you, or sister, you take the time you need. These things are important. तो ये जो पासवानी हृदय होना चाहिए, जहाँ पे अगर आपके टीचर को या किसी को एकदम से कोई जरूरत पड़ जाती है, तो आपको ऐसा उनको समझना चाहिए और उनको कहना चाहिए, ठीक है, आप अपना समय ले लीजिए, आपकी जगह पे हम एक दूसरे व्यक्ति को आज तैयार कर लेंगे। And finally, I have here organized. और आपको बहुत ही व्यवस्थित होना बहुत जरूरी होगा। So we want them to know what's going to happen and have a plan. तो उनको पता होना चाहिए कि आपका जो आपने जो आगे बना रखा है कि कैसे चलना है, जो प्लानिंग किया है उसके अनुसार सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। So like we talked about with the VBS, to decide who's going to do what assignments, pass them out. That's part of being responsible, is to be organized. तो अगर आप व्यवस्थित हैं, तो हमने जैसे पहले बात की थी वीबीएस के समय में, आपको पहले से ही तय करना होगा कि आपकी इस जिम्मेदारी को कौन करेगा, असाइनमेंट्स को कौन कराएगा। तो ये सब जो बातें हैं पहले से ही आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। So like when we discussed passing out different assignments to different teachers, obviously if you see a children's pastor trying to do everything by themselves, then they're not organized. अगर आप समझ रहे हैं कि आप बच्चों के पासवान हैं और आप खुद से सब कुछ करने जा रहे हो, तो आप समझ लेना कि आप व्यवस्थित नहीं हो, आपको और भी लोगों को जिम्मेदारी बांटनी होगी। So the jobs need to be divided up and passed out to responsible people. That's a good way to organize. और एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात को व्यवस्थित करने का मतलब ये होता है कि जिनको आप जो जिम्मेदारी दे सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को बांट दीजिए। Yeah. So, and there's lots of qualities. I see Brother Joel, Pastor Joel has also said kindness, trustworthy, responsible. These are all very important. Yes. और अभी जैसे जॉयल ब्रदर ने भी, पास्टर जॉयल ने इसमें मैसेज डाला है कि हमें नम्र भी होना चाहिए, हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया की भावना भी होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए। कई सारी बातें उनने भी अभी शेयर की, जो बिल्कुल जरूरत है इन सब की। Okay, so that's one question that Brother Johnny asked that I thought we could cover today. और ये प्रश्न था जो पिछले दिनों में ब्रदर जॉनी ने हमसे पूछा था, तो हमें लगा कि हमें इसका भी उत्तर दे देना चाहिए, इसलिए मैंने आज इसको भी कवर किया है। So also for these 12 weeks, we've been learning all sorts of different leadership items like recruiting, planning your year, how to organize your VBS, and how to be a responsible leader. और हमने पिछले इन 12 कक्षाओं में हमने अलग-अलग बातें सीखी और हमने हर तरीके की जिम्मेदारियां किसको देना है, क्या-क्या करना है, हर बातों को पिछले इतने क्लास में हमने सीखा। तो और आज भी हमने एक नए कैसे जिम्मेदार अगुवा बनना है, ये भी हमने सीखा है। So it's time for certificates. अब ये समय है
जब हम सबको जो सर्टिफिकेट है वो देना चाहते हैं। So we are going to give the certificate to those of you who have attended this time and have done homework assignments. और हम लोग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और हम सर्टिफिकेट उनको देना चाहते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था, जिन ने हमारा जो अमलीकरण है, जो असाइनमेंट्स हमने दिए थे उसको किया है, उन सबको हम सर्टिफिकेट देना चाहेंगे। So for you to earn this international certificate, I need you to have done 5 homework assignments. और अगर आपको ये जो इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपको चाहिए, तो आपको कम से कम 5 जो हमने असाइनमेंट होमवर्क असाइनमेंट दिया था, अमलीकरण दिया था, वो करने होंगे। So we were trying to track in the Mexico office with Google Classroom. Excuse me, sister. Can you put the full screen so that we can, I think if we have finished with this class. Yeah. 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 हम लोग कोशिश कर रहे थे इसको मैनेज करना गूगल क्लासरूम के द्वारा। Yeah, sister. So, but it wasn't working very well, and not everyone put things up into Google Classroom, so we're not sure who all did the homework. Actually, जब हमने तो चाहा था गूगल क्लासरूम के द्वारा आप सबका सब कुछ हम ट्रैक करेंगे, हमें बहुत सही से पता चल जाएगा, पर हुआ क्या, बहुतों आप में से बहुतों ने गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं कर पाए हो आप लोग। So I have lost track of who did what homework assignments because they didn't get in Google Classroom, and the Mexico office is sleeping when you're awake, etc. और होता क्या है कि आप लोग ने जैसे गूगल क्लासरूम में कुछ अपलोड नहीं किया, तो मुझे क्लियरली पता नहीं है कि, या मुझे या हमारे ऑफिस को ये नहीं पता कि आप में से कितनों ने होमवर्क किया है और किसने किया है किसने नहीं किया। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग उठे होते हो हम सोते हैं, और जब हम सोते हैं तो आप लोग उठे होते हो। So I apologize. That's my fault for not being organized. So I said, Sister Blessy, will you please help me? मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को व्यवस्थित नहीं कर पाई, तो मैंने इसलिए सिस्टर ब्लेसी को बोला कि आप मेरी मदद करिए। So also I want to ask you if you could help me. If you have pictures that you sent, could you talk to Blessy so she knows all the assignments you did accomplish? और आप लोग ये कर सकते हैं कि आपने जितने जो असाइनमेंट जो अमलीकरण है वो किए हैं, अगर तो आप मेरे से डायरेक्ट आप मुझे बता सकते हो, मुझे भेज सकते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये सब असाइनमेंट्स कर रखा है। So the international certificate will have also available extra stars. So you'll have an extra star for each homework assignment you do past the 5. और अगर आपने 5 अमलीकरण असाइनमेंट्स कर लिया है, तो आपको उसमें ऑलरेडी जो है उसके लिए जो स्टार है वो आपको जरूर मिलेगा। पर अगर आपने 5 से ऊपर किया है, जैसे 6 किया है, 7 किया है, तो एक एक जो आपको स्टार्स है वो और बढ़ता जाएगा। So, like, for example, Brother Johnny in classroom, I can see he's done, I think, maybe 9 homework assignments. जैसे कि ब्रदर जॉनी ने क्योंकि क्लासरूम में अपलोड किया था, तो इसलिए मैं देख पा रही थी कि उनने करीबन 9 असाइनमेंट ऑलरेडी कर लिए हैं। So he will get the certificate and 4 additional stars on it. तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसमें जो 4 एक्स्ट्रा स्टार उनको और मिलेगा। So I want to encourage you, it's okay to go back and do some previous assignments. अगर आपने इस समय अभी तक असाइनमेंट्स जो थे वो नहीं किए हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप क्या करिए, वापस पीछे जाइए और जो जो हमारे असाइनमेंट्स थे उसको आप कर लीजिए। So you can choose which ones and say, okay, I want to do this one and this one, and get them, take a picture and send to Sis Blessy.
और आप क्या कर सकते हो कि आप ठीक है ये असाइनमेंट थे और आप क्या करोगे, ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, और वो करके आप सिस्टर ब्लेसी को भेज दीजिए। Also, you can put in the group and encourage everyone in our group together. यस, और सबसे अच्छा हम ये कहेंगे कि आप ग्रुप में डालिए, ताकि आप जब करेंगे दूसरे के लिए भी एक उत्साह का कारण बन जाए। So in our presentation here, I have reviewed some of the assignments. So I want to show you the assignments again. मैंने कुछ जो आप लोग ने अमलीकरण किया था, मैंने उन अमलीकरण को भी देखा था, और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी। Yes, so also Pastor Joel is asking about regular attendance. Correct. For this class, we mentioned to earn the certificate, you need to do some of the assignments. अभी पास्टर जोएल ने जैसे हमें मैसेज भेजा, तो उनने हमारे जूम में अभी मैसेज भेजा है कि अगर जिनने रेगुलर क्लास अटेंड किया है, सब क्लासेस अटेंड किया है, रेगुलर क्लास किया, उनके बारे में क्या। पर आपको बता दें, हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो असाइनमेंट करेगा, अमलीकरण करेगा, उनको है जो सर्टिफिकेट्स हम देना चाहते हैं। Also, some of these assignments you probably have already done, and that counts. ओके, और इसमें से शायद हो सकता है कुछ असाइनमेंट्स आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, जिसको जो गिना जाएगा। So if I say, okay, organize a meeting with your teachers, plan a meeting. If you did a meeting and had a meeting, you can say, oh, I had a meeting, and all you just need to do is write a note and say we had a meeting on this day, and you send that to Blessy, and that counts. या और आप जैसे कि हमारा एक असाइनमेंट है उसमें, जिसमें लिखा है कि आपके साथ जो वाकई जन है, उनके साथ आप बैठ के बातचीत करिए और उन्हें उत्साहित करिए, और जो जो आप आगे करने वाले, जैसे आपने बीबीएस की बात हुई थी, आप करने वाले हो, उसका प्लानिंग करिए। ये सब बातें हमने की थी। तो अगर आपने ऑलरेडी कर ली है इस चीज को, अगर आपने पहले ही कर ली है, तो आपको क्या करना है, आप हमें मैसेज कर लिख के दे सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैंने ये जो असाइनमेंट उस महीने में या उस दिन कर लिया था। Also, one of the assignments is to encourage someone on your team. So you probably already did that assignment as well. और जैसे एक असाइनमेंट था कि आप आपके टीम के दूसरे लोगों को उत्साहित करिए, तो मोस्टली तो हमें लगता है कि ये तो आप सबने कर ही लिया होगा, तो ये जो असाइनमेंट है वो भी आपका गिना जाएगा। So also I want to mention we had some questions in the Spanish group that it doesn't have to be a VBS event. You can, all of the VBS items can apply to any special event you have. हाँ, अगर हमने ये भी एक जगह पे बोला था, अगर आप VBS नहीं कर रहे हो तो जो भी चलेगा, उसकी जगह पे अगर आप उसके जैसा कुछ भी कर रहे हो, तो उसको भी हम वो भी मायने रखेगा। So several of the leaders in the Spanish group are doing a special event for Day of the Child. What is that? Like Children's Day. Children's Day. Okay, okay. So, is it you are saying for dedication of the children or Children's Day? No, it's like once a year, a special day where, like Mother's Day, but Children's Day. Yeah. Children's Day. Yes. Got it. So, जैसे हमारे इधर बच्चों का दिवस होता है, उसके जैसे उस दिन को क्या कर रहे हैं ये लोग, VBS नहीं कर पाते, पर उस दिन में कुछ खास एक साथ मिलके मैक्सिको में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। So Children's Day in Mexico is coming up, I think, April 30th. शायद उनके उधर जो चिल्ड्रन बच्चों का दिवस है वो अप्रैल 30 तारीख को है, तो उस दिन वो लोग कर रहे हैं। So they're doing like the clown decorations and all the planning for Children's Day instead of a VBS. तो वो क्या कर रहे हैं कि जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, वो सब बच्चों के दिवस के ऊपर बेस करके वो लोग सजा रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। And some other ones
decided to do their special event for Easter, and they did it last week. और कुछ लोगों ने ईस्टर के दिन जो पिछले हफ्ते था उस समय में ये असाइनमेंट कर लिया था. So we had a class on how to do a special event, and I mentioned this can be for a VBS or any other special event. और हमने एक क्लास ली थी, कक्षा ली थी, जिसमें हमने कहा था कि हम कुछ भी ऐसे खास करेंगे, कोई एक इवेंट करेंगे, तो उसमें चाहे तो वो आपका वीबीएस भी हो सकता है, चाहे तो वो कोई एक दिन खास, जैसे अभी हमने बताया चिल्ड्रंस डे हो सकता है, या ईस्टर को जो स्पेशल उन्हें इवेंट जैसे किया वैसा कर सकते हो. So also that's why I'm telling you now, you have 2 weeks to finish assignments, and then we will pass out all the certificates and close the class. और आपके पास अभी 2 हफ्ते हैं जहाँ पे आपको पूरे असाइनमेंट करने हैं. 2 हफ्ते और हम दे रहे हैं और उसके बाद इस जो सेशन को हम पूरी तरह से वैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमारा समाप्त करेंगे हम. So next week is special for Mother's Day. Ideas for Mother's Day. अगले हफ्ते हम लोग जो है मदर्स डे के लिए कुछ आइडियाज लेंगे, तो वो बहुत ही खास रहेगा. Okay, so I'm going to share with you now the all the assignments, so we can review what they are. मैं आपके साथ इस समय साझा करूंगी पूरे असाइनमेंट्स को जो अमलीकरण हमने दिए थे, ताकि आपको भी एक बार याद आ जाए कौन कौन से अमलीकरण हमने दिए थे. Wait a minute. Okay. Okay, so assignment number 1, make student chart for tracking assignments. This is for weekly discipleship classes. ये जो हमारा था साप्ताहिक जो हम एक क्लास ले रहे हैं, मतलब जो आपका अभी ऑलरेडी चल रहा है, उसके लिए हमने कहा था कि बच्चों पर निगरानी रखने के लिए विद्यार्थी चार्ट बनाएं. So this was for Champions curriculum, but you can use for other weekly program with students. ये हमने बनाया था जो हमारे जो साप्ताहिक, मतलब हर जो संडे को आप जो भी करिकुलम यूज कर रहे हो, वैसे हमने चैंपियंस किया था संडे स्कूल. अगर आप जो भी कर रहे हो उसको फॉलो करने के लिए ये एक चार्ट बनाया था. And like some were in time machine and others are in different systematic classes. So I mentioned you can use a chart for whatever curriculum you are currently using. और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे आप चैंपियंस कर रहे हो या आप टाइम मशीन कर रहे हो या आप कोई भी करिकुलम कर रहे हो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको क्या करना था, ये ऐसा चार्ट बना के असाइनमेंट का जो अपडेट्स है वो हमें भेजने हैं. So this is to help you get organized, so you're tracking the discipleship of the students in your children's ministry. तो इससे क्या हो रहा है कि आप जो बच्चों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप उनको आप इस सेवा को ले रहे हो, चला रहे हो, ताकि हर चीज आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से आपको पता चल जाए. Okay, assignment number 2 is to try to recruit extra leaders. So find a helper and delegate the chart to that helper. और हमारा अगला जो ऐसा अमलीकरण था वो था उस चार्ट को एक अगुवे को सौंपे, मतलब अपने साथ किसी एक और अगुवे को तैयार करे सेवा में. So this assignment, to earn this one, you want to get a helper in your children's ministry. Find someone to join you. और इसको पाने के लिए आपको बस इतना ही करना होगा कि आपकी सेवा में आप किसी एक और भाई या बहन को खड़ा करें जो आपको सेवा में मदद करे. Okay, assignment number 3 is schedule a motivational meeting for your teachers.
और जो हमारा अमलीकरण 3 था वो है अपने शिक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन सभा का समय निर्धारित करें। So many already finished a meeting with your teachers, so that counts. You can say, okay, I did a meeting with my teachers. और कई आप लोगों में से बहुत सारों ने ये किया था, आपने किसी अपने साथ के जो टीचर्स है उनके साथ, शिक्षकों के साथ आपने मीटिंग की थी। Also, to earn this assignment, if you haven't done it yet, you can schedule one, get it on the calendar, and tell your teachers, and that counts. You don't have to have the meeting already in the next 2 weeks. अगर आपने समझ लो पहले नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप अभी भी इसको आगे आने वाले इन 2 हफ्तों के बीच में कभी भी कर सकते हो। But I do want to know that you have a date and you've told your teachers so that you're faithful to do it. तो पर उसके लिए आपको पहले ही क्या करना पड़ेगा, मुझे जानना है कि आप पहले ही उसकी जो दिनांक है, जो तिथि है, जो डेट है, पहले ही हमें बताएं कि हम इस तारीख को मेरे उस टीचर के साथ हम ऐसे करने वाले हैं, हम मिलके एक दूसरे को उत्साहित करने वाले हैं। Okay. Assignment number 4, tell one of your teachers something encouraging. और जो असाइनमेंट 4 है हमारा, अमलीकरण 4 है, वो है अपने किसी एक शिक्षक को उत्साह करने वाली कुछ बात बताएं। On this lesson, we learned how important it is to encourage our staff on a regular basis. क्योंकि हम जब ये वाला जब पाठ कर रहे थे तो हमने सीखा था कि कितनी ज्यादा जरूरत है कि हमारे साथ जो शिक्षक हैं उनको उत्साह करने की या प्रोत्साहन देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। We talked about how it's difficult. No one says thank you. That maybe the senior pastor doesn't see you and you feel hidden. And so I shared it. You are the one responsible to encourage all the teachers all the time. That you are important. You're making a difference. क्योंकि कई बार ये बात आती है हर समय कि हमें उत्साहित करने वाला कोई नहीं होता, हमें धन्यवाद देने वाला कोई नहीं होता। इवन हमारे जो पास्टर्स हैं वो हमें समझते भी नहीं है, उत्साहित भी नहीं करते। इसलिए हमने ये कहा था कि आपको उत्साहित रहना बहुत जरूरी है और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ के दूसरे शिक्षकों को आप उत्साहित करें। So if you haven't done this one, this will be easy. All you have to do is encourage someone and then tell Blessy that you did it. और अगर आपने अभी तक ये वाला असाइनमेंट नहीं किया था तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हो और आप सिस्टर ब्लेसी को बता देना कि मैंने ये वाला असाइनमेंट इस दिन इस समय पे किया था। Okay. Assignment number 5 is to create discipline rules for your class. और जो हमारा अमलीकरण 5 है वो है अपनी कक्षा के लिए अनुशासन के नियम, कुछ नियम बनाने के लिए हमने बोला था। So we discussed, I gave you some posters you can use, but you can also make your own. हमने ऑलरेडी आपको कुछ पोस्टर्स दिए थे जो आप प्रिंट आउट निकाल के चाहे तो आप अपने कक्षा में कहीं पे भी लगा सकते थे, और हमने आपको ये भी उत्साहित किया था कि आपके कक्षा के लिए आप खुद के नियम बनाइए। Assignment number 6 is to work on your annual children's ministry calendar. और हमारा जो असाइनमेंट 6 था वो था बच्चों की सेवकाई के अपने वार्षिक कैलेंडर पर काम करें। मतलब जो वार्षिक कैलेंडर हमने बनाने के लिए बोला था उसको बनाने के लिए बनाना होगा आपको। So this includes your weekly classes and what curriculum you're using, and if you're going to do a VBS, what date. तो ये इसमें आते हैं कि आप कौन-कौन से जो पाठ है वो कब-कब करा रहे हो और आप अपने वीबीएस को कब करा रहे हो, हर बातों को आपको इसमें मेंशन करना होगा। Okay, assignment number 7 is to decide, are we going to do a VBS? और अमलीकरण 7 ये था कि चुने कि क्या आप इस साल वीबीएस करना चाहते हैं कि नहीं। So here's an example where one of our leaders in the Spanish group said, okay, we're going to do it in August 21st. और ये हमारे एक स्पेनिश ग्रुप के एक लीडर ने किया था
तो उन्हें ये बोला था कि हम इस तारीख को हम अपने VBS को करने जा रहे हैं। Okay. Assignment number 8 is make a list of the staff positions you want for your VBS or for a different event. What are the staff positions so you can pass out the jobs? और हमने अमलीकरण 8 ये दिया था कि अपने VBS या किसी और जो इवेंट आप करना चाहते हो उसके लिए या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अपने मनपसंद स्टाफ पदों की सूची बनाएं। So here's an example. She put the leader at the top. That's Alba. और आप इधर देखेंगे एक सिस्टर ने उनने जो उनके लीडर हैं उनको सबसे ऊपर डाल दिया, उनका नाम है अल्बा। You can see the second one, she has registration in blue, and that's Sister Adriana. और ये जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका नाम उधर दिया गया हुआ है। And for decoration, you can see there she has 4 lay sisters that are going to do decoration. और उसको चर्च को सजाने के लिए उधर आप देख सकते हो 4 सिस्टर्स का नाम दे रखा है। For music, she's put Brother Uriel in charge. और जो म्यूजिक के लिए, गाने के लिए और उसके लिए भाई ओरियल का नाम दे रखा है। And now she's got the theme is Academia for Heroes. So you can see she's not using the Circus VBS, she's using something else, and that's okay. और ये सिस्टर जो है सर्कस VBS नहीं कर रही है, वो दूसरा एक VBS थीम कर रही है, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। So that's a great list of staff. तो ये सारे हमारे जो उनने बड़ा लिस्ट बनाया था स्टाफ का, वो है। So assignment number 9, decide on some details for your VBS or other event. और जो हमारा अमलीकरण 9 था वो ये था कि अपने VBS या किसी अन्य कार्यक्रम के विवरण पर निर्णय लें। So this is someone's assignment they turned in. It's in Spanish, but I will translate it for you. ये किसी ने स्पेनिश में किया था, पर मैं आपके लिए ट्रांसलेट इसको कर देती हूँ। And you might remember this week we talked about games. Do you want inside games or outside games? तो हमने, आपको याद होगा हमने बात की थी कि खेल के बारे में, तो आप जो इंडोर गेम्स करना चाहते हो या आउटडोर गेम्स करना चाहते हो। So this person put number 1, I want the games inside. तो पहला जो पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि हम अंदर वाले जो गेम्स है, कमरे के अंदर खेलने वाले गेम्स है, उसको करना चाहते हैं। And number 2, this person decided on having relay games, so those kinds of races. और उनने दूसरी बात जो बोली, उनने कहा कि बाहर का भी जैसे रिले होता है जिसमें भागना दौड़ होता है, वो गेम भी हम कराना चाहते हैं। And number 3, it says we will have a main sermon. और उनने तीसरी बात ये लिखी कि हम उसमें जो मुख्य पाठ है, जो प्रचार है, वो भी लाना चाहते हैं। So just helping you break down some of those decisions that you need to make. तो मैं आपको वापस जस्ट या बातें समझा रही हूँ, याद दिला रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको भी कैसे अपने अमलीकरण को करना है। So if you want to do this assignment, you can apply it to Children's Day or VBS or any event you have coming up. तो अगर आप भी इन अमलीकरण को करना चाहते हो तो आप कुछ भी, किसी का भी कर सकते हो, चाहे तो वो VBS का हो, चाहे तो वो जो हमने पहले कहा था चिल्ड्रंस डे का हो, या और कोई भी इवेंट कुछ भी कर रहे हो, तो उस पे बेस कुछ भी आप दे सकते हो। Okay, assignment number 10, organize the training of your work team, set a date for the training. और हमारा अमलीकरण 10 ये था कि अपने कार्य टीम के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करें, तारीख निर्धारित करें और अगुओं के लिए अमलीकरण पर काम करें। So we talked about possibly 2 training meetings for your staff. हमने उस समय पहले बोला था कि आप कम से कम 2
जो पूरे स्टाफ के साथ, जैसे आप अगर वीबीएस कर रहे हो उससे पहले कम से कम 2 ट्रेनिंग करें, 2 मीटिंग करें। So the first meeting is like, welcome, who wants to participate in the VBS? Yay! और पहला जैसे कि आपका ये था कि सबको स्वागत करें और कहें कि आप में से कौन-कौन वीबीएस के एक-एक बातों में शामिल होना चाहते हैं। And then getting all their names and phone numbers. और उन सबका नाम और फोन नंबर जरूर लिख के लें। Then in the second meeting, you can pass out all those assignments to them. और जो दूसरी मीटिंग आप करोगे उसमें उनके ऊपर एक-एक जिम्मेदारियां आप उनको दे सकते हो। So you can see this example is also in Spanish, but they have chosen some dates for training. और आप देख सकते हो कि इधर स्पेनिश में कुछ आपके लिए मदद मिल जाएगी, कुछ उदाहरण हैं और उनने आपने देखा होगा कि कई सारे अलग-अलग तिथि डेट्स को उनने डाला है इसमें। And she has there her location and the schedule. She's going to do 10 a.m. to 1 p.m. for the training. और उनने उधर कौन सी जगह पे करने वाले हैं और कौन से समय को इस्तेमाल करने वाले हैं उसका भी उनने इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। Okay, and assignment number 11 from last week was to use technology to promote your children's ministry. Try something new. और जो पिछले हफ्ते जो हमारा असाइनमेंट 11 था वो ये था कि अपने बच्चों की सेवकाई को विकसित करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। So we looked at like you could use Canva to make a little poster and promote it in WhatsApp, for example. और आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप में डालने के लिए छोटा सा कैनवा जो हमने आपको पिछले दिन सिखाया, एक ऐप है उसके अंदर छोटे-छोटे पोस्टर्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। Yippee! Yes, done. Yes. Okay. So questions or comments, ideas of what you would like to see in the future. I would like to open this up now for discussion. So अभी जो समय है मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के आइडिया मैं चाहती हूँ आगे हमें क्या-क्या सुधार करना है या हमें क्या-क्या करना चाहिए। जो बातें हैं आप खुल के मेरे से बात करिए। आपकी दिल की बात को सिस्टर क्रिस्टीना इस समय सुनना चाहती है। What topics would you like to see in the future for training? अगर ट्रेनिंग जब हमें देना है कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई विषय है, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि उसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा सिस्टर हमें बता दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यस प्लीज, आप लोग सब बताइए। इस समय अपना अनम्यूट कर सकते हो और वीडियो भी ऑन कर सकते हो और खुल के बात कर सकते हो इस समय। प्रेस द लॉर्ड मैम। यस सिस्टर मैरी मैम बोलिए। की आवाज आ रही है क्या? यस यस आ रही है। जी मैम, मुझे ये पूछना है जैसे कि हमारा जो चैंपियंस जो क्लास चल रहे हैं, जो हमारा 13 लेसन तक है, तो वो इसी मई के लास्ट तक हमें उसको पूरे कंप्लीट कर देने हैं क्या? नहीं, Sister Christy, Sister Mary is asking, when you said we have this training for only for 2 more weeks, we are going to finish it. So she's asking, do we need to complete the complete 13 chapters in this 2 weeks timing? Yes. Yeah, ma'am. No, sister. She's asking for the champions. I think they are in their 4th lesson or no. Yeah, champions. Yeah. No, you just keep going weekly. और सिस्टर जो आपका संडे स्कूल चल रहा है चैंपियंस का, वो तो आपको हर हफ्ते करते रहना, वो तो चलता रहेगा जब तक आपका इस पूरे साल है, मतलब हाँ ऐसे चलते रहेगा। इसके बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। अभी आप कौन से चैप्टर में हो?
7 लेसन हो चुके सर, 7 लेसन कंप्लीट हो चुके मैम। Hmm. ईस्टर वाले Very दिन good. मैंने She 7 has लेसन completed. Okay. Sister, she has completed 7th lesson till 7th lesson. That's great. Yeah, you can just keep going weekly with systematic classes. और आप सिस्टर व्यवस्थित कक्षाओं के साथ आप इस तरीके से आगे आगे जाइए, अपने पूरे चैप्टर्स को पार्ट को आप धीरे धीरे हर हफ्ते खत्म कर सकते हो। जी मैम। लेकिन मैम जैसे कि मैंने बच्चों से बात किया था बीबीएस क्लास के लिए, तो बोल रहे कुछ बच्चे बोल रहे कि मेरा मई के लास्ट तक पेपर और स्कूल खत्म हो जाएंगे, छुट्टियां पड़ेंगी, तो कुछ बच्चे 15 जून तक बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मैम बीबीएस क्लास में, तो इसके लिए मैं क्या करूँ नहीं, मैम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई she is saying some she had talked with some children, so they are saying till June, I mean May last they have exams and all, maybe by June 15 they are planning for a BBS. So is it okay to do that time? Yes. So yeah. So if you choose your date, Sister Mary, say maybe you say you go on the calendar. I'm gonna look at my calendar really quick. So like if you say let's do VBS on June 18th, that's finish your assignment because you chose the date. सिस्टर मैरी, जैसे अगर आप आप प्लान कर रहे हो बीबीएस का और आपने अभी जैसे बोला जून 15, आपने अगर उस डेट को सेलेक्ट कर लिया है आपके बीबीएस के लिए, तो आपका एक असाइनमेंट उसमें भी हो गया है। जी मैम। यस। Thank you so So much, ma'am. also sis, if you say okay we're gonna do VBS in June, if you decide 3 decisions for your VBS, you can also do that this week or next week. So you decide the games will be inside, the games will be even though the VBS is in June, but you finish deciding, that's finishing your homework assignment. सिस्टर मैरी, जैसे आपने अभी प्रश्न किया उसमें एक और बात है कि अगर आप इसमें ये भी प्लान कर लेते हो कि आप कौन कौन सा गेम करने वाले हो, अंदर बाहर, या कौन सी ऐसी जो बातें हैं वो भी अगर कर लेते हो, तो उसमें भी आप देखोगे जो हमारे असाइनमेंट था वो एक दिन का और असाइनमेंट आपका हो जाएगा। तो आपको वो सब जो जितने असाइनमेंट हमारे 12 असाइनमेंट्स है, 12 असाइनमेंट्स ना सिस्टर, या 12 असाइनमेंट्स हैं, उनको आपको उसमें से कम 5 करने हैं। मैम बट ये भी तो है ना कि मुझे तो जूम मीटिंग से चलाना, तो आप तो गाइड करेंगे ना फिर, चर्च में तो जाकर मैं नहीं कर सकती ना फिर, ये दिक्कत है। Yeah, no problem, you can do it through Zoom. She's asking if I can, I will be doing through Zoom only. Yes, so, yes. yeah. So you can, so you say not having relay games because we're in Zoom, I'm going to use online games, and that it counts for your decision. Yes. या अभी जैसे आप जूम के थ्रू कर रहे हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो, अभी बाहर और अंदर तो खेल नहीं सकते बच्चों के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन गेम्स खेलोगे, तो आप उसको लिख सकते हो कि हम लोग ऑनलाइन गेम करने वाले हैं, तो भी आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा। यस मैम। So probably Sister Mary, you have 5 already done. You just have to look at them and they're probably already done. तो सिस्टर मैरी, आपने तो हमें ऐसा लगता है शायद 5 असाइनमेंट इस तरीके से वैसे कर ही लिया होगा, पर आप एक बार पूरा देख लीजिए और अगर आप उसमें और करते रहोगे उतने आपको स्टार्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम क्लियर करने के लिए। थोड़ी डाउट थी, बस जूम मीटिंग का ही दिक्कत है और कुछ तो नहीं है। Yeah. What she says, Sis Blessing? Yeah, she is very thankful to you for clearing her doubt, and she was saying I was little bit worried as I was doing everything through Zoom. So, but you have helped me to now given a new suggestion of doing online games also. Yes, actually, we also have a workshop booklet with online games, so you can find extra ideas for online games, and it's you're still reaching children on Zoom. Yeah. So, सिस्टर मैरी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि आप जूम के माध्यम से भी आप बच्चों तक प्रभु के प्रेम को पहुंचा रहे हो।
है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास एक किताब भी है जो हमारा लिंक हम आपको दे सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन गेम्स कैसे खेलना है वो भी आप आसानी से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। जी मैम, आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा मैम, या ताकि सिस्टर मेरे प्लीज डू सेंड द लिंक लिए। in the group so that she can go through it. Yes. और कोई? Um, Yeah, Pastor Prabhakar. Hello, sister. As she asked, yes, in future we are what topic we have to like suggestion of teaching, right? Yes. Yeah. Yes. So is it only on children's or any other groups like family, youth? Yes, only children. Only children. Only children. So we were It's starting for youth. VBS or Sunday school. No, like Sunday school, though this 10 classes will be over, right? Hello. What's the question, brother? No, but this 10 classes will be over for this champion. Yeah, Sister Christy, your question, I think your question is like, what more new themes you are desiring for? Is it your question? Your question is not clear, sister. Sister Christy? I'm sorry, I don't understand the question. Is it what Pastor Prab, was it what's next after champions? Is that the question? No. You said like you want ideas. What more themes or what more new like? So he's asking: is it for Sunday school? Is it for VBS? Is it for children? What type of means what Okay. material are you Yeah, asking? so our ministry is focused on children. So it's inside of children's ministry. So that's yeah, children only. But it does we have curriculum ready for. Sorry, what was that, brother? So whatever teaching happens in the future, it will be on first children's. Yes. Yes. Yeah. So that so since you asked us on what you want to know about the teaching, so I was curious about, we were starting about the youth classes. So I thought you might take lessons like as champions for 10 weeks or another for 15 weeks. So I was about to ask about that. If it is on children, so you can like whatever you're teaching, we will follow that one. There's no suggestion from us. Wonderful. Thank you, Pastor. Very encouraging. Yeah. So this champion will be over by these classes, huh? So champions is a curriculum that we have written. It has 39 lessons, and that is available. And the student books go all the way up to like 18 years old, so you can use for youth. Okay, thank you. So after this part 1, we have part 2, part 3 also, na? Yes. For champions? Yes, there's 3 units. 3 units. This is the first unit. Correct. Yeah, this is the first unit. Okay. And we are doing our VBS. This is our 4th day. Sister Blessy, as you asked, like Sister Christy wanted to ask some questions, or she wanted to talk. Do like any questions from you people? Yeah, so that's what she is asking for, new ideas. Like what is like main thing is sister want to know in India what sort of new themes, or is it sister new Yes. things you want to add in, you know, what teaching we can give? Is there any idea you feel like, yeah, this is something which if we will get some information, it will be very helpful. So is there yeah, please. So for example, with the Spanish group, they have asked, please do champions training again.
That's one question. They want to train. Please train on champions again. This is one thing they asked in the Spanish group. लाइक हमारे स्पेनिश ग्रुप में कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारा चैंपियंस का जो ट्रेनिंग है आप उसको वापस हमारे लिए लो. Also, they've asked for VBS training again. Yeah. और उनने हमसे वापस VBS की ट्रेनिंग के लिए भी मांगा है, डिमांड किया है, दोनों का ही वापस करने को कहा है. So in many countries over here, the vacation is in July. So they asked, we have set a training for VBS in June for leaders that want help again to organize their VBS. तो कई लोगों ने हमसे, जैसे उनका जुलाई में VBS है, तो उनने हमसे कहा है कि जून में हमें एक और बार इसकी एक अच्छी सी ट्रेनिंग की जरूरत है. So also I've been asked for that help with the special needs, children with disabilities. So I'm working on a workshop for that. तो हमसे किसी ने इसके लिए भी बोला है कि जो अपाहिज है या थोड़ा उनको किसी प्रकार की परेशानी है, ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए भी हमसे करिकुलम को मांगा है. Are you guys feeling trained well for using champions, or do you feel like you could use more training on how to use champions? We are feeling good, sister, but it is for us, it is new and going on some topic every week, training and teaching on Sunday. So we would like to go on this champion teachings, like not lesson number 10, or we would like to go further, as you said, unit 2, unit 3 as there. Yes. And 5 days we are doing, or 7 days we will be doing it. For the next week, like from next day, we cannot we can't bring all those students who all come to the VBS. So they'll be going to hostels, other villages, and like schools and all. But how, like, any ideas or any programs that we can conduct again to meet them or to gather them? There was maybe a little bit of network issues. Sis, Leslie, were you able to hear his whole question? Yeah, I think it was not clear. Network issue is still there. I think he's saying for there are you want to do some another program like VBS you are already doing now, but for some children like since we are doing VBS, so by 7 days it will be over. So from next Sunday, like children are regular as church people, like 14, 13 people. But in VBS, we have 50 plus, 60 plus. So like in a year once, we are going to have VBS. Like in between, can we have another event or like any ideas to bring those students again to church? Okay. Sister, he is asking like already since my battery is low, it may get call cut. So if you text in the group, I will be happy, since we have a lot of power cuts here. So I have only 4% battery. No problem. We will handle, and this video will be there in the YouTube link. So you will get your answer there. Thank you, sister. So it is getting recorded. Yeah. So don't worry. Okay. Thank you, sister. Yeah. So Sister Christy, he is asking like at present, like for the VBS, they already gathered around 50 students were there. But like from next week onwards, now they did already, they have done a VBS. But if they are planning to bring more children, if they are planning to bring these children again, what sort of new program they can do for them? Do you have any idea? So that they can continue in something, with new, more like these programs. Okay, sis. So sis Blessy, if you could add this to your list of desired training for India, would be more special events, how to do evangelistic events, different kinds of things during the year. Yeah. Okay. I will do that. And for now, we have a special one next week, Mother's Day.
and it includes some ideas for a special Mother's Day event, which can be very evangelistic, because many people want to do something special for their mother. Even though they don't go to your church, they will go for that special because the child's going to make them a flower or do something special for mother. So that can be very evangelistic. और अभी जैसे मदर्स डे आ रहा है, तो हम लोग जो अगले हफ्ते में मदर्स डे के ऊपर भी एक क्लास ले रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे क्योंकि सब बच्चे भी चाहते हैं कि अपनी माँ को किसी तरीके से आदर करे, सम्मान करे, है ना, तो वो लोग जरूर चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर भी एक बहुत ही खास क्लास लेने वाले हैं अगले सप्ताह, जो आपके लिए एक नया प्रोग्राम भी होगा। So this, since it's May, it's coming up in 1 month, you can have a very evangelistic, special Mother's Day event. तो आप लोग इसको एक ऐसा बहुत ही खास जो मदर्स डे को बना सकते हो, जहाँ पे जिसको हम वचन के साथ जोड़ते हुए हम एक ऐसा सेलिब्रेट कर सकते हैं। So that class is next week. और वो जो क्लास है वो अगले हफ्ते है। Very good. या और कोई क्वेश्चंस? यस मैम। यस भूमि सिस्टर, पूछिए। हमने स्टार्टिंग में कैलेंडर बताया था आपने बनाने के लिए, तो वो मैंने बनाया था, लेकिन उसमें एक ही हफ्ते का बनाया था क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का था। या भूमि सिस्टर बोलिए। हाँ, आपने एक ही हफ्ते का बनाया था। यस मैम, तो वो हमने पूरा तैयार भी किया था, तो वो भी एक असाइनमेंट था हमारा, लेकिन वो क्लास अभी हमारी हुई नहीं, जो भी है मतलब जैसा भी। तो आपने ये बोला था कि अभी स्टार्टिंग के लिए आपके लिए यही ठीक रहेगा, तो मैम वो जो असाइनमेंट में हम वही कैलेंडर डाल सकते हैं या उसको प्रॉपर बनाना है? Yeah, Sister Christy, she made a calendar in at that time, but the only thing is the calendar because as at that time they started the champions curriculum, so but now things were changed, as in between they were not able to follow that chart. So she's asking, can I make a new chart so that because now things are changed, so she wants to make a new chart. Is it okay? Yes, of course, sis. Yeah. हाँ सिस्टर, आप एक नया चार्ट बना लीजिए जहाँ पे आप और सही तरीके से पूरा अपना चार्ट को बना के दे सकते हो। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे स्टार्टिंग में हमारा मतलब अभी हमारा तीसरा क्लास चल रहा है। हाँ, तो मैम अभी हमारे 3 ही असाइनमेंट हुए हैं, तो 3 में मैं 2 डाल चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्लास ली थी उसका डाल दिया था, सेकंड वाला भी वो मैंने नोट करके डाला था, तो उसमें वो नोट ही करके डालना है या फिर पिक लेकर, जिसको हम जिम्मेदारी सौंपी है उसके साथ पिक लेकर डालना है? हाँ, अभी सिस्टर she has attended only she has done only 3 classes now, like because she joined afterwards, not in the initial stage, so she joined very late. So she is saying now, do she need to do like again all other assignments, as you said, at least 5 assignments, or how it will be with her? So maybe that's something for you, sis Blessy, for you to decide if we want to repeat this same class for those who didn't get to see them all, or if we want to make changes. So I think probably the answer is for us, the leadership team for Equip and Grow India branch, to decide what's the next training going to be. Okay. So आपके इस जो प्रश्न का उत्तर है, अभी हम लोग का कुछ नया डिस्कशन अभी इधर ऑलरेडी चल रहा है कि हम कैसे इसको भारत में और ज्यादा व्यवस्थित करें, तो उसमें उसका उत्तर आएगा। तो अभी आपको आपके उत्तर का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। So, for example, Sister Blessy, the Spanish
branch has decided to repeat this class with the 12 weeks. And so then you could say, okay, we'll repeat it. It's going to start in August. And then you can do the whole thing if you want. Wait for the next one. You can make, if we're going to do that for India, I don't know yet. तो अब हमें सोचना पड़ेगा इंडिया वालों को, क्योंकि स्पेनिश में तो उन्होंने कहा है कि उनकी पूरी 12 की 12 क्लास वापस होने के लिए, जो कि अगस्त महीने से कुछ शुरू होगा। तो अब हमें प्लान करना पड़ेगा हमारे इधर इंडिया में हमें कैसे करना है। क्या हम इन 12 क्लास को वापस लेना चाहते हैं या कुछ हम नया शुरू करना चाहते हैं। तो सिस्टर ने वो मेरे ऊपर डाला हुआ है, तो मैं थोड़ा सबसे डिस्कस करके मैं बता दूंगी। या सिस्टर, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दैट। Yeah, we have to come out with some good options. So that's part of us making the decisions for India helps to know what your needs are. So it helps us to know, okay, Sister Bhumi, you have been here 4. So do you want to do past assignments to get the certificate, or should we do a different class for you to start the new class? It helps us. Okay. अभी आपने ये जो प्रश्न किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जानना है अभी ये सब बातें कि हम इस पूरे के पूरे सेशन को वापस करें या फिर हम कुछ नया शुरू करें या फिर पूरा का पूरा करके हम आपको सर्टिफिकेट दें। तो इन सब बातों को हम भी जानना चाहते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग हमसे इन सब बातों को साझा करें ताकि हम इसके बारे में और सही तरीके से सोच पाए। So the Spanish group has decided to change it so it's audios in WhatsApp. The class is going to be in WhatsApp instead of Zoom. Oh, so Spanish वालों ने एक और सजेशन दिया कि हम Zoom से हटके हमें पूरा WhatsApp में आना है, तो इन्हें एक पूरा ग्रुप बना के WhatsApp में अब इनके आगे की क्लासेस होगी। Because in Cuba they just do not have enough internet to do Zoom. Yeah. क्योंकि जूम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिनके पास इतना अच्छा इंटरनेट नहीं होता कि उनको वो पूरा का पूरा इसको देख पाए। They have also decided that they want to be more strict. So if you don't do the homework after 2 weeks, you can't keep going in the class. और उनने तो ये भी कह दिया कि बहुत ही कठोरता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। जिनने अगर 2 क्लास के बाद अगर वो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। So that's going to be something for Blessy and I to discuss and decide, and then she will make that announcement for you all. But it's helpful for her to know what it is you guys want and need. ये बहुत ही हमारे लिए मददपूर्ण होगा कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कैसा होना चाहिए। आपकी राय हमें अगर पता चल जाए तो हमें आगे की बातों को सोचने में, प्लान करने में बहुत आसान हो जाएगा। So I will send you, Sis Blessy, all that information so you can see what the Spanish group is doing, and you can also modify and go, okay, for India group, we want this. Okay, yes, that will be helpful. हेलो हमारी क्लास चल रही है, इस बार हम अपने बच्चों को 4th क्लास कराएंगे। Okay, this time this week they are going to do 4th chapter. Okay, बहुत अच्छा। हेलो तो मैम आगे से कराते रहे अपनी तरफ से। हाँ सिस्टर, संडे स्कूल आपका चलता रहेगा। हाँ, संडे स्कूल आपका चलता रहेगा, एक के बाद एक क्लास चलता रहेगा। हाँ जी, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम कराते रहेंगे उसमें। यस कराते रहोगे आप, ठीक है। कि जैसे आप स्टॉप बीच में, तो हम तो कराते रहेंगे ना। आप लोगों का चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, क्योंकि वो तो पूरा कोर्स है ना, तो वो आगे चलता रहेगा, तो आपको स्टॉप नहीं करना। शी इज आस्किंग सिस्टर, नाउ इन 2 weeks वी आर गोइंग टू एंड अप दिस सेशन, बट द सेम क्वेश्चन, like do we need to continue champions, the Sunday school they are doing, they need to continue, yeah. Yes. So they are getting little bit,
they have a doubt like if we are stopping this training, then shall we continue the Sunday school? Yeah. वो तो आपको कंटिन्यू करना होगा. हाँ जी, सुवार्ता maybe, सिस्टर आप कुछ पूछ रहे हैं? Maybe are Yeah. you interested in a champions where every week you get what the children are getting, so it's just champions and it goes the whole time? Is that something that you were asking for earlier, Blessy? With her, you're saying? So it seems like maybe some people were asking for the classes with these leaders, our classes, to match the champions books that you're giving to the students every week. No, at present, they have a doubt like when we are saying this session is going to over, this is only we have last class next week. So they are like getting doubt, do we need to continue Sunday school? So is it also going to stop the Sunday school? We said no, you don't have to stop the Sunday school, but you need to continue it. Only this training session, coaching session is going to finish this session. So that's why I was asking you, sister, are they hoping for a training next time that goes with the student books, that goes with the weekly systematic classes? Yeah. So you are saying like every week giving systematic classes through the Zoom? Is that what they were asking for earlier? Is that what you were asking for earlier? That's some of the confusion. I think we had this like maybe 5 weeks ago as well, this question. Yeah, earlier there were like everyone was saying like they had a planning. They were thinking like we will continue champions, chapter 1, chapter 2, chapter 3, like that. We will be continuing and they will be going and doing in the churches. Right. So in that they were very much comfortable. But so that's why I'm saying, Sister Bessie, if that's something everyone wants, that's something you can plan. You can say, fine. This is what India wants. This is what we want. And that can be asked for. We can plan that. Got it. Yes. So we can plan that. So what I will do is I can, because in this now, I think we have some brothers and sisters only, but I will be personally, taking view from everyone, those who are in our team and those who were not even able to attend the Zoom meeting, because there are some brothers and sisters who are using our curriculum, but they are not, because of the time, they are not able to connect in our Zoom, but they are using our curriculum. So there are many people, because like for ladies after 8 o'clock, they are not, they can't freely attend a Zoom meeting and all those things. Right. So there are some, so it will be helpful. I will personally, talk with them also, so that we can come up with some good points. So if you talk with them to ask, do they want systematic classes? So every week they're given the lesson for Sunday. Yeah. Remember also to ask the question, remember it's hard when we're all on different lessons. So would we stop and everybody has to wait and start unit 2 together? How would we get all of the same lesson? Same page. Yeah. So, okay, I'll do that. Yes. अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि जैसे हमने सबने अलग अलग समय पे चैंपियंस को शुरू किया है, कोई चैंपियंस के चैप्टर 1 में है, तो कोई चैप्टर 6 में है, तो कोई चैप्टर 10 में पहुंच गया है. तो अब हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि अगला अगर हमें सेशन चैंपियंस का ही लेना है तो इसको कैसे लाना है, मीन सबको एक जगह पे कैसे लेके आए, कहाँ से शुरुआत करें. तो हमारे कई सारे ऐसे डाउट्स हैं जो हमें आने वाले इस 2 हफ्ते के अंदर क्लियर करना है, ताकि अगला सेशन शुरू करने से पहले हम सब कुछ अच्छे डिसीजंस लेके आगे आ पाए. Sister Suarta? Yes, sister. सिस्टर मेरा क्वेश्चन था कि चैंपियन अगर अगस्त से अगन ले तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चैंपियन समझने में बहुत वक्त लग गया. हेलो सिस्टर, प्लीज. सिस्टर आपका कहने का क्या मतलब है
कि हम चैंपियंस को कंटिन्यू करें, हर एक हफ्ते लें क्लास को। हाँ नहीं अगेन अगस्त से अगले साल अगस्त में पुन्हा काय म्हणतात त्याला पुन्हा चालू करायचं फिर से अच्छा, चालू करे हाँ फिर से चालू करें, है ना? हाँ ओके, क्योंकि ठीक है। चैंपियन समझने में थोड़ा वक्त लग गया और क्लास असाइनमेंट थोड़ा और क्लियरली बहुत अच्छे से और होना चाहिए पढ़ा सकते हैं। ओके, सिस्टर हाँ हाँ क्रिस्टी, Suvarta sister's suggestion is when we are starting the new session, if you can give us systematic, lesson 1, lesson 2, lesson 3 every week, systematic teaching, it will be helpful for us, so that because still they are getting very much confused sometimes how to take the complete lesson. So it will be very helpful if you can, give a systematic teaching for each chapter of champions. Yes. yes Okay. So how would we get everyone on the same week, the same lesson? Maybe set a date to start unit 2, or well, you'll have to think about that and pray about that, Sis Blessy. Yes, let's see, because I feel like in the coming days there are more churches that are going to merge for our Sunday school. So we will be coming up with some new how we will be coming with new idea, and God will guide us. So we we need everyone's prayer for this, because we are in a place where really we need to work it out very properly for the coming days. Brother Joel is asking how can we get VBS material, printed material. And that's the main question always. Yeah. You have permission to print and make copies. You get to do. सिस्टर यही बोल रही है, हम लोग अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, पर आप लोगों के पास पूरा परमिशन है, खुद से बुक्स को आप प्रिंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, and even they can put their own church name or their own name, we have that permission. So आप लोगों के पास पूरा परमिशन है, आप अपने चर्च का नाम, अपने संस्था का नाम अपने बुक्स पे आप लगा के आप खुद से उसको प्रिंट कर सकते हो. yes Okay, very good. I think our time is up. If you have more questions, please share with Blessy. She will gather all these ideas for what training you would like, and so we can plan the future. But next week is Mother's Day. अगले हफ्ते मदर्स डे का है, पर अगर आपके पास और प्रश्न है, क्योंकि अब हमारा समय बहुत हो गया है, तो आपके पास और प्रश्न है तो आप ग्रुप में जरूर डालिए, या आप मुझे सीधा बता दीजिए, ताकि हम उन सब पे मिलके काम कर पाए. Thank you for coming today, and thank you for sharing, and hope you can get 5 homework assignments done for your certificate soon. और आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर अपने असाइनमेंट्स को करें, ताकि जो एटलीस्ट 5 असाइनमेंट को कर लीजिए, ताकि हम आपको सर्टिफिकेट दे पाए. God bless you all. Yeah. yes Okay, प्रभु आप सबको आशीष दे. Yeah, कोई भी, yes, कोई भी